Assalamu alaikum, my dear students. Hope and pray you are keeping great. You are keeping fine by the grace of Almighty Allah. So today we will carry forward this grammar item called punctuation, and today we are going to talk about 3 punctuation marks that are full stop, question mark and exclamatory mark. So my dear students, yesterday we talked about what's punctuation, then we switched on to the usage of capitalization. So today we are going to talk about one more punctuation mark, very important punctuation mark called full stop or period. So full stop is the most popular punctuation mark, students, because you simply cannot write even a single sentence without using it. The main use of full stop is to mark the end of a sentence that is a complete sentence, and it indicates a long pause before a new or fresh sentence begins, right? So my dear students, let's talk about the usage of full stop now. Full stop or period. So it's used to mark the end of a declarative sentence or an imperative sentence. यानी full stop और period का इस्तेमाल हम हर declarative sentence या imperative sentence के end पे करते हैं, ठीक है? यानी full stop हम हर declarative और imperative sentence के आखिर पे लगाते हैं. So my dear students, what's declarative sentence? A sentence that makes a statement or assertion, जिसमें आप अपना statement बयान करते हैं, ठीक है? ठीक है, अपनी बात बयान करते हैं. So you can express your statement in 2 ways, either positively or negatively, ठीक है? So declare करना, I go to school, I teach punctuation. So these are all examples of declarative sentence. So हर declarative sentence के आखिर पे full stop आता है, ठीक है? और imperative sentence के बाद भी आप full stop का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? So what's imperative sentence? Imperative sentence is a sentence that expresses command, request and advice, ठीक है? So जिसमें आप कमांड दिखाते, ऑर्डर दिखाते, रिक्वेस्ट दिखाते या एडवाइस दिखाते, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, शट द डोर, माइंड योर ओन बिजनेस, राइट? सो this full stop or period, it essentially marks a pause greater than the one marked by a comma, and is also used to suggest that there is nothing more to say on a topic. For instance, I like playing football, okay? So the sentence is complete. That's it's considered to be complete, right? और ये longest pause माना जाता है, जबकि कॉमा shortest pause माना जाता है, ठीक है? So following are some examples of declarative sentence. For example, he is a noble man, ठीक है? So आखिर पे full stop आएगा. I teach English. It's an example of a declarative sentence or assertive sentence. Declarative sentence को दूसरा नाम assertive sentence बोलते हैं, ठीक है? इसमें आप assert करते हैं, ठीक है? बयान करते हैं. या और एक एग्जाम्पल है, शी वेंट टू द मार्केट. फिर पीरियड आएगा, फुल स्टॉप आएगा, फिर नया सेंटेंस शुरू होगा, शी बॉट मैनी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, ठीक है? सो ये थे डिक्लेरेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल्स. तो इनके आखिर पे फुल स्टॉप आएगा. सो इसी तरह से इम्पेरेटिव सेंटेंस के कुछ एग्जाम्पल्स में देता हूँ. फॉर एग्जाम्पल, डोंट मेक नॉइज, इसके बाद भी फुल स्टॉप आएगा, ठीक है? So go there, इसके बाद भी full stop आएगा. It's an example of imperative sentence, ठीक है? So please let me go, request दिखाता है, ठीक है? So इसके बाद भी full stop आएगा, ठीक है? So this your use number first. So second use जो है full stop का, it's used after initials. Full stops also appear
after initials of a person. ठीक है, so what's this initial? So initials, so students, initials are the capital letters with which begin each word of a name. For example, if it's United States, the initial will be US. So इनके बाद भी full stop आएगा, U full stop, S full stop. ठीक है, so initials के बाद में भी हम full stop का इस्तेमाल करते हैं. So initial मैंने बोला यानी ये कैपिटल लेटर्स होते हैं जिनसे हम कोई वर्ड जिनसे कोई वर्ड शुरू होता है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, और एक एग्जाम्पल आप देखेंगे, यूके फॉर यूनाइटेड किंगडम. सिमिलरली W.B. Yeats for William Butler Yeats and so on. और यू कैन से R.K. Sharma. ठीक है, R फुल स्टॉप K फुल स्टॉप Sharma. ठीक है, इसी तरह से P फुल स्टॉप K फुल स्टॉप Jan, P.K. Jan. ठीक है, एक्स्ट्रा. सो और एक यूज है फुल स्टॉप का, दैट्स इट्स यूज्ड आफ्टर मोस्ट एब्रिवेशंस. जहां पे आप एब्रिवेशंस देखते हैं, ठीक है, उनके बाद में फुल स्टॉप आता है. फॉर एग्जांपल, प्रोप फॉर प्रोफेसर, AM फॉर एंटी मेरिडियन, PM फॉर पोस्ट मेरिडियन, ATC full stop for extra, and so on. So full stops can be used after the first letter of each abbreviated word. For instance, BBC, British Broadcasting Corporation. So but you should bear one thing in mind, that you should note it, that in current English no full stop is used after doctor, Mr and Mrs. यानी करंट इंग्लिश में डॉक्टर, मिस्टर और मिसेस जब इनके शॉर्ट फॉर्म्स लिखते हैं, DR फॉर डॉक्टर, मिस्टर फॉर मिस, MR फॉर मिस्टर, इस तरह से मिसेस फॉर MRS. ठीक है, सो इनके बाद में फुल स्टॉप नहीं आता है, क्योंकि द फुल स्टॉप इज नॉट जनरली यूज्ड. अगर कोई एब्रिवेशन खत्म हो जाती है किसी वर्ड के उस लेटर से जिससे वो स्टार्ट होता है, ठीक है, जो फुल वर्ड होता है, अगर उसकी एब्रिवेटेड फॉर्म भी वो सेम लेटर से शुरू होगी, खत्म होगी, तो वहां पे फुल स्टॉप नहीं आता. फॉर एग्जांपल, डॉक्टर देखिए, DOCTOR, यानी फुल वर्ड में पहला लेटर जो है वो है D, लास्ट है R. अगर इसकी एब्रिवेटेड फॉर्म देखेंगे आप, ये DR, यानी फर्स्ट लेटर और लास्ट लेटर मैच होता है. सो ऐसे एब्रिवेशंस के साथ आप फुल स्टॉप का इस्तेमाल नहीं करेंगे. ठीक है, सो उसके बाद है वन मोर पंक्चुएशन मार्क, एंड वी कॉल दैट इंटरोगेटरी और क्वेश्चन मार्क. ठीक है, सो वेयर डू वी यूज दिस क्वेश्चन मार्क और इंटरोगेटरी मार्क, राइट? सो द क्वेश्चन मार्क इज यूज्ड टू मार्क द एंड ऑफ ए डायरेक्ट क्वेश्चन. सो हर डायरेक्ट क्वेश्चन के बाद में इंट्रोगेटिव यानी क्वेश्चन मार्क लगता है. एंड यू नो व्हाट्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस? A sentence that asks a question. For example, what do you do? Note of interrogation आएगा, ठीक है, क्योंकि question है. Are we allowed to feed the animals? If it rains tomorrow, should I bring my umbrella? Are you excited about your new job? Who lives in that house? So this interrogative mark, it's used to indicate uncertainty. When you are in a doubt, when you are not sure about something, so we use interrogative mark there. For example, John was born in 1988. Note of interrogation. Although it seems to be a statement, right? Or he's sick. Note of interrogation. I saw him going out this morning. इस तरह से इसका तीसरा यूज भी है, इट्स यूज्ड एट द एंड ऑफ ए क्वेश्चन टैग. यू नो क्वेश्चन टैग्स, ठीक है, आपने 8 में पढ़े होंगे क्वेश्चन टैग्स क्या होते हैं. ठीक है, सो क्वेश्चन टैग्स के लास्ट पे भी आप इंट्रोगेटिव मार्क का इस्तेमाल करेंगे. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, वी हैव नेवर सीन दैट, हैव वी? इंट्रोगेटिव मार्क. दे आर नॉट डूइंग वेरी वेल, आर दे? Interrogative mark. So but you should also note one point, that do not use a question mark at the end of a question in reported speech.
ठीक है, यानी डायरेक्ट क्वेश्चन के साथ आप क्वेश्चन ये इंटरोगेटिव मार्क लगाएंगे, बट इनडायरेक्ट क्वेश्चन के साथ आप ये नहीं करेंगे, यानी जब रिपोर्टेड स्पीच में होगा क्वेश्चन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, शी आस्क्ड मी वेयर ही हैड स्टेड, ठीक है, ये रिपोर्टेड स्पीच में, ठीक है, ये करेक्ट है, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट, क्योंकि लास्ट पे आपने नोट ऑफ इंटरोगेशन नहीं। अगर आप ऐसा लिखेंगे नेक्स्ट सेंटेंस, शी आस्क्ड मी वेयर ही हैड स्टेड, फिर आप नोट ऑफ इंटरोगेशन डालेंगे, सो वहां पे आपका पूरा सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि हम क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल डायरेक्ट क्वेश्चंस के साथ करते हैं, ना कि इनडायरेक्ट क्वेश्चंस के साथ। फॉर एग्जांपल, शी आस्क्ड मी वेयर आई वाज गोइंग, इसके साथ नोट ऑफ इंटरोगेशन नहीं आएगी, क्योंकि ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है। सो इसके बाद है तीसरा पंक्चुएशन मार्क, दैट्स exclamation or exclamatory mark, ठीक है। So it's used to express strong feelings or emotions such as shock, fear, happiness, surprise, anger, or a raised voice, and it's also used to give command, ठीक है, हुक्म जहां पे देते हैं आप। It's used after interjections, ठीक है, interjections के एंड पे भी आप इनका इस्तेमाल करते हैं, या एक्सक्लेमेशंस में। फॉर एग्जाम्पल, स्टॉप, सिट डाउन, अहम, कैन आई मेक अ सजेशन, व्हाट अ गॉर्जियस रूम, हेल्प, जॉन डोंट टच दैट, यू डिड अ ग्रेट जॉब, द मील वाज सो गुड, शी इज such a quiet girl. So this is your exclamatory mark. But let me tell you one more thing, that sometimes this exclamation mark is used in place of a question mark. कभी कभी आप exclamation mark का इस्तेमाल question mark के इंस्टेड करते हैं, उसकी जगह पे करते हैं, but when the question has the meaning of an exclamation rather than the question. लेकिन जब उस क्वेश्चन की मीनिंग क्या होगी, एक्सक्लेमेशन, क्वेश्चन की मीनिंग नहीं दे दो। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट स्टूपिडिटी इज दिस, यहाँ पे नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन आएगा, हालांकि ये लगता है ये क्वेश्चन है, बट ये है नहीं, क्योंकि इसका सेंस एक्सक्लेमेशन है, ठीक है। सिमिलरली, हाउ हॉट इट इज, व्हाट अ स्वीट वॉइस यू हैव, व्हाट अ क्लेवर गर्ल यू आर। सो I think this is ample for today, so I'll stop here. I hope you have understood it. Thank you. Bye bye. Take care. Allah Hafiz.